We are inside Saudi Arabia pavilion. So you can see here all the fun because the heat is so deadly here now. So let's get inside and I'll show you the scenes. Wasn't that good, but Germany pavilion is on top notch. Pakistan और इंडिया का pavilion देखना है, so we are finding it. काफ़ी धूप है अभी भी, मतलब धूप नहीं जा रही. This is the UK pavilion behind me and it is extremely disappointing. बहुत फारिग बना हुआ है अंदर से. So if you are coming here, don't go, time waste होगा. We are heading towards Pakistan pavilion. तो मेरे सामने ही है, पहुँचते हैं और सीन्स दिखाते हैं. Inside Pakistan pavilion, or it's all about culture and heritage. बाहर से it's too futuristic और अंदर से it's all about culture and heritage, which shows the current situation and the future situation of Pakistan. So we are going inside Switzerland's pavilion. We have to get umbrella. We are going in. It's a hiking kind of a trek, and they asked us to follow the line path in this dark inside. So we are here at India's pavilion. Revision is right. Let's go inside. So we are inside Indian's pavilion. तो यहाँ पे काफ़ी लेट है, तो दिखाता हूँ सारी नेचर, पीछे वॉर के बारे में कुछ चीज़ें थी, वॉर वेपन्स वगैरह, और इट्स ऑल अबाउट नेचर. तो ऊपर जाके देखते हैं क्या सीन है. नो ऑफेंस, पाकिस्तान का पेविलियन अंदर से इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा इंडिया का था, और काफ़ी बड़ा था, लेकिन बाहर से इट्स नॉट सो गुड, बट पाकिस्तान का बाहर से बहुत अच्छा है.